అయ్యో నా దేశంలోనే నాకు శత్రువులు ఉన్నారే. భరోసా రఖియే. వాళ్ళ మీద నాకు పుస్తకం కప్పుతుంది కానీ నా జాగ్రత్తలో అయితే నేను ఉండాలి కదా. ఎవరక్కడ నా కోసం పడవలు సిద్ధం చేయండి. అలాగే గుర్రానికి ఆ గుర్రం మాత్రం యుద్ధంలో గుర్రలాగా ఎగిరితన్నట్లే నేను ఈ అర్ధరాత్రి పండు వెన్నెల్లో హాయిగా పిలుస్తూ వెళ్తాను. రావోయి చందమామ మా వింతగా వినుమా, రావోయి చందమామ వరకు ఎక్కడికి పోయినా హాయిగా బతుకు. యుద్ధం చేస్తున్నావా? అయితే చెప్పు తెలిసింది. क्या फर्क पड़ता है? अरे ये हमारे महामान्य है. ये तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम युद्ध भूमि से आ रहे हो तो जीत किसकी हुई? अरे जीत किसकी हुई? सुन पा रहे हो? जीत अरे मूर्खुड़ा, नीनु राजाधिराज राजुलके राजु आखिरी चक्रवर्ती అయిన డంకన్ మహారాజ్. മഹാമാന്യനായ ഡങ്കനെ മുന്ന് അടിയനോട് പൊറുക്കണം. എനിക്ക് മുറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ വെടികൊണ്ട് പ്രഭു. എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു. യുദ്ധം തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു, ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. പക്ഷം ആരുടെ പക്ഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. अरे हमारा पक्ष, अपना पक्ष और ड्यूक डंकन का पक्ष जो तुम्हारे सामने खड़े हैं. ഞാൻ അതിന് महामानी को अभी तक युद्ध भूमि में नहीं देखा. చెప్పు నీ తమ్ముడు చెప్పు. പ്രഭു, ഞാനൊരു ബാറിലിരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുകയായി. പെട്ടെന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് രണ്ടുപേർ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. എന്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ തലക്കിടിച്ച് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അവർ എനിക്കൊരു വാൾ